हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू टुडेज स्ट्रीम। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी स्टार्ट करते हैं। और पता नहीं मैं लेट हूँ जल्दी, मेरे को खुद नहीं समझ में नहीं आ रहा। फटाफट मैं बाहर बैठ के अपना होमवर्क कर रहा था, जैसे मेरा टाइम होने वाला था, मैं भाग कर आया हूँ। आई होप सो आज स्ट्रीम अच्छी चली, तो मैं एडवांस में पहले ही आज मैं बिटरेट ऑलमोस्ट कम कर रहा हूँ मैं। बहुत ही मतलब ये डिसेंट रहेगी काफ़ी ज़्यादा। तो चलो चलते हैं। गाइस यहाँ पर काफ़ी ठंड लग रही है मेरे को अभी। मैं लिटरली चेयर पे बैठा हूँ, मोबाइल को भी चार्ज लगाई, वो 95 है ये। अब आप सोचोगे 95, वो भी 95 पे चार्ज होना था, मेरे मन लगा था अभी। मेरे को अभी चार्ज रखना है, बिकॉज मैं वो काफ़ी सारे ऐसे गेम खेलता हूँ, जैसे मैं BGMI खेलता हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलता हूँ, एंड एस्पार्ट भी खेलता हूँ, एस्पार्ट 9। तो मेरे को इतने सभी सब में अपने डेलीज हो गए, सब ग्राइंड करना, तो उसमें होते होते हो जाएगा। फिर मैं जेनशाइन को वैसे पर्सनल ग्राइंड भी करूँगा। और आज हाँ, मैंने थोड़ा अपना एशिया अकाउंट में थोड़ा एक्स्ट्रा ग्राइंड कर लिया था खुद ब खुद। एक्चुअली मैं सुबह 6 बजे उठा था, तो लिटरली बिना वीपीएन बिना कुछ मेरी पूरी येलो पिंग जा रही थी उस एशिया सर्वर में। ओके गाइस, यस गाइस, लेट्स गो। बट फर्स्ट हम डेली करेंगे। ओके, ये क्या हो रहा है? ओके लेट्स, पहले इसको बोलने दो पाइमोन को। पाइमोन इज एक्सट्रीमली फूडी। वी नीड अ गुड टीम। ओके, इसने मेरे को बता दिया दिस इज, ये अपनी इंटरनेट की मतलब पूरी हिम्मत है, इतनी हिम्मत पर ही चलेगा अपना। सो मैं आज वैसे भी कुछ ज़्यादा ऐसे बक बक करने का नहीं सोच रहा मैं। आई जस्ट वॉन्ट टू डू एवरीथिंग। एंड अपना जो एशिया सर्वर है उसमें अपने वेपन को, जो अपने को कल अपना 5 स्टार मिला था, फर्स्ट 5 स्टार जो अपने वेपन पहने से अपना निकला हो, एंड इट वॉज एक्चुअली विन। आई वॉज पुलिंग फॉर दैट और आई गॉट इट। तो उसको मैं लेवल 80 कर दिया लेवल 90 के लिए। बस रेजिंग हो गया होगा। मैं सुबह 6 बजे गया था, तब मेरे 2 कंडेंस बचे थे, प्लस में अब तक एटलीस्ट 1 कंडेंस जितना हो गया होगा। एंड अपने पास जो टी पॉट की से वो है, एक और रेजिन पड़ा है अपने पास। फिर उसको टी पॉट वाले रेजिन को नहीं जानता कौन सा, वो तो मुझे याद नहीं है कौन सा रेजिन होता है वो। है ओके गाइस, बट अपने जो ग्राफिक्स हैं वो ठीक है। बिकॉज ये इस मोबाइल 15K का आया था, 15K के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे। और ये एक्चुअली में मैक्स सेटिंग पर चला देगा, मतलब सब कुछ हाई सेटिंग, कुछ भी लो नहीं, सब कुछ हाई। इसमें मैं सिर्फ स्ट्रीम नहीं कर सकता, बट हाँ मैं अपने पर्सनली खेल सकता हूँ। मेरे को कभी कुछ खेलना हुआ कि आज मैक्स ग्राफिक में खेलो, तो हाँ मैं सब कुछ चला देगा ये। इसमें इसने करूँगा, आई जस्ट वांट टू ग्राइंड एवरीथिंग दैट आई कैन। एंड इसमें हम न्यू इवेंट कर लेते हैं, फिर अपना एशिया में जाएंगे। तो इसमें अपन जो अपना जो होगा ना, ये अब इस बात में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। देख रहा हूँ स्पीड आ रही है ना, बिकॉज हाँ चलो स्पीड आ रही है, मतलब स्ट्रीम हो तो रही है, चलो कुछ तो हो। पता नहीं गाइस डिले चल रहा है नहीं चल रहा, मैं नहीं जानता उसका। तो कोई है तो स्ट्रीम को बता दो डिले है, मतलब से बफर वगैरह कुछ भी है तो। ओके जल्दी आ काजवास बस। This is order. As one with wind and cloud. The wind knows me. क्रिट ओके, क्रिट पर गाइस 9 देखो, अच्छा डैमेज देता है। अगर मैं उसके बस्ट को भी क्राउन करूँ तो 10 के दे देगा ये। एंड वन मोर गुड थिंग गाइस, अब है ना हमारे पास एक क्रिट डैमेज वेपन है। सो दिस मीन्स हम मल्टीपल टीम को हम अनलॉक कर सकते हैं। सो अब अपन नेक्स्ट मिसप्लिटर आएगा उस पर भी पुल कर देंगे, बट अपन को फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी सैन्य है। और हमने एक और बात, अपने वेपन बैनर पे अपनी पीटी बना रखी है, अपनी पीटी है वेपन बैनर पे। वेपन में मतलब कैरेक्टर बैनर पे पीटी है, वेपन तो हमने लिया था, उसमें हमने 3 पीटी बना ली थी, पर उसके बाद से ओके। ओ ट्यूनर वाला है ना, ठीक है। वो क्लीनिंग वाला होता तो बात है। ट्यूनर मतलब मेरे को मोस्टर्ड जानने के बाद इसको मेरे साथ वापस में आना होगा मेरे को 6 इसके पास। आई होप सो तब तक बारिश चली जाए। नो
अरे उसकी चाबी, अरे शिट यार, वो बहुत परेशान करता है। एक सेकंड गाइस। ओके गाइस, आई एम बैक। अरे वो कुछ थोड़ा काम था, डोंट वरी अबाउट इट। आज स्ट्रीम बंद नहीं करूँगा मैं, कुछ दिनों से जैसे मीटिंग के कारण करनी पड़ी थी मेरे को, तो यू डोंट नीड टू वरी। अरे इसके अंदर भी तो है ना वो एक क्रिस्टल फ्लाई है क्या? नो क्रिस्टल फ्लाई, वाई नो क्रिस्टल फ्लाई? अरे इसकी हेल्प करनी है, चलो। One with nature. मैं जानता हूँ ये कौन सा है। चलता हूँ, निकल। हाँ तो भाई चलते चलते, अरे मेरे को इसको ऑटो को भी मैनुअल करना है, इसको प्लेइंग प्लेइंग। ओके श्योर थिंग ओल्ड मैन। ओके एंड ये वाला करना है यार, ये बहुत पेन है गाइस। इसमें मैं शैंगलिंग का बर्स्ट मेरे को सेकंड हाफ के लिए बचाना होगा। यहाँ पे मुझे जोंगली चाहिएगा। यहाँ पर हमको काफ़ी, मैं इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हमें को ये भी करना है। पहले थोड़ी सी पिंग आ जाती तो ठीक था। Solidify. Into the wind. Teamwork is dreamwork. Fallen leaves adorn my nights. 11,000 बहुत कम गाइस, ये बहुत कम डैमेज था। वैसे देखा जाए तो काफ़ी कम डैमेज है, कंपेयर करें अपने जो पहले के डैमेज से। बिकॉज अपनी शैंगलिंग के लिए हमने बैनेट को अप नहीं किया ना, हम मतलब मेरे को टाइम लगा बैनेट को अप करने में, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। बिकॉज मेरे पास कुछ भी नहीं है इस अकाउंट में बैनेट को अप करने के लिए। लिटरली मैं फार्म भी नहीं कर सकता, मैं ना करना चाहता भी नहीं हूँ एक्चुअली। सबसे बड़ी बात बस आई वॉन्ट एक्चुअली द आर्टिफैक्ट। अभी सबसे बेस्ट टाइम मेरे लिए आर्टिफैक्ट ग्राइंड करना। और टैलेंट भी सही है, एक्चुअली कहते हैं इंपॉर्टेंट भी है टैलेंट, मैं जानता हूँ, बट एक बार चलो आर्टिफैक्ट हैव ऑर्डर। पता है 18 के, बिकॉज मैं जोंगली कुछ देता ही नहीं है भाई। मैंने उसको, मैंने क्रेडिट तो बहुत हाई दे रखे जोंगली, ओके, बट बाकी कुछ नहीं जोंगली में मेरे। मैं गोबा देखो कुछ डैमेज नहीं देता मेरा गोबा। सब कुछ बफ वगैरह है उसके पास अभी। 3,000 का, ठीक है। डेड है ये, डेड डेड होना चाहिए, नहीं था, अब हो जाएगा। अब डेड है बस, अब कुछ नहीं करना। ये अपनी पिंग आज इतनी फ्लक्चुएट क्यों कर रही है? अभी तो कुछ सेकंड पहले येलो जा रही थी। क्या करें अब, इस व्यूवर्स को भी क्या कहें हम जाकर। वैसे कहीं आजकल क्या चल रहा है? ओके हमने देखा था, हमने क्राफ्ट करना है कुछ सही तक आज। ओके ठीक है, अपना टाइम बच गया। यहाँ पर अपन क्राफ्ट करके रख लेते हैं, को कल काम आएगी, कल आपको डोमेन करनी है। हम ब्लिजर्ड ही करेंगे अब से इसमें। आई नीड टू डू ब्लिजर्ड। Thank you for add Astra. ओके फारूजान, ओके 20 आवर्स का एक्सपीडिशन एंड आज गाइस हमको ये भी तो 60 प्रीमोस, ये एक्चुअली में कोड है, रिडीम कोड जो मिल रहा है, आप सर्च कर लीजिए, आप मिल जाएगा। मैंने भी कहीं से निकाला था। ओके कुछ है क्या? ओके ये आ गया, इसको नेविगेट करके रख लेते हैं। वॉक अराउंड लुयार, इस तरफ है लोरी के। गो टू क्वेस्ट, फर्स्ट गिव मी दिस प्रीमोस गान्यू। ओके completed everything, okay.
इसमें मेरे को सेव करूँगा, बिकॉज मैं 10 पुल कर चुका हूँ। आई द थिंक ये मेरे को 5 बस कन्फ्यूज़ हुआ है मेरे को, इसमें होता हो निकालूँ या ला निकालूँ। जो शाव पे एक्चुअली मैं बह गया था एक्चुअली, अब थोड़ा रेगरेट हो रहा है। तो इसमें अगर सिंगल पुल करता तो ठीक था। लेट्स अब साइलेंट होते कुछ सुनते हैं ना। Paimon votes we go say hi to Xiangling first. Yeah, Zhongli. Huh? Xiangling? What a pleasant surprise meeting you here! Oh, why the pleasure is all mine, as is the surprise, surely. It must be fate that brings us together in this place. How have you fared as of late? I sense you are older and wiser than the last time we met. It seems your travels continue to yield valuable insights. You are too kind. So, Xiangling, are you here to listen to stories over tea again? I had originally planned to set out after this last round of tea. However... I had planned to take a walk to Chingsa village and gather some nascent bamboo shoots, which are currently in season. A villager there once gave me a small sample, and they possessed a most excellent flavor. Huh? Nascent bamboo shoots? What? Wait, Paimon knows! Because Xiangli prefers the finer things in life, right? Okay, Mr. Particular. Mr. Particular. The nascent bamboo shoot has a uniquely tender texture and a delicate sweet taste that its normal cousin cannot match. An astute observation, Paimon. You know me well indeed. Lanten Rite is almost upon us, but besides the bamboo shoots, there are a few other items I have not yet procured from Director Hu's list. May I ask if you have already made arrangements for the Director days Who's ahead? Director Who tao? Well, we were planning to use the opportunity to say hi to some of our friends, but before we were able to figure out a schedule, we ran into you. Well then, might I invite you to imagine the sheer delight that is a soup cooked with the freshest nascent bamboo मेरे को shoots in पानी आ all रहा है। the land. Generous cuts of pork belly. I'm already fragrant bamboo okay. shoots हम second placed वाला ऑप्शन together in a select करेंगे। pot and left to simmer slowly for half a day. You're doing this on purpose, aren't you? Paimon's onto your plan. You just want to hoodwink us into fetching your bamboo for तो you. अपना अपन सेकंड अकाउंट में ये वाला इवेंट करेंगे, वो अपन स्पीड रन करेंगे एक्चुअली में, बिकॉज़ यहाँ पर आराम से Why, स्टोरी सुन I सकते हैं। assure you, I would do no such thing. I merely wish to inform you of the freshest, most succulent and flavorful bamboo Succulent. shoots one could ever hope to taste. Ugh. Let's go, traveler. Paimon's taste buds can't take it anymore. Collecting a few bamboo shoots shouldn't take too long. Paimon has got to get her hands on some of that soup. पाइमन बहुत Such fine चटोकरी है, specimens बहुत are उसको खाने का indeed शौक well रहता है। worth the excursion. Very well. I shall leave the bamboo shoots to you. Should you have the good fortune to find some, please share them with me as well. See? Paimon knew he was just bamboozling us. Bamboozling. However, there is no need to rush. The streets of Liu will be bustling with visitors and filled with all manner of celebrations during the festive period. By all means, go wherever your interests lead you. The nascent bamboo shoots would be but a wonderful final touch to a most exceptional feast. What an honor it would be to savor them in the company of We'll check you friends. in पहला वाला। We're heading out. Enjoy your walk, Youngly. Take care now, you two. God, Geo God. Wow. ये देखो, हम शिट नहीं कर सकते क्या? लेट्स गाइस, एक फोटो लेते हैं हम डबल जूम लिए। वेयर इज अ कैमरा? Okay, let's go and get those bamboo shoots first. मैं जानता हूँ, एक सेकंड गाइस, यहाँ पे वेट करो।
यहाँ पे हमको एक बोर मिलता है ऑलवेज, वो हमको यहाँ पे बहुत बुरा मारता है हमेशा। अगर आपका 1 HP का कैरेक्टर हो तो प्लीज़ डोंट गो टू दिस टेलीपोर्ट वन, वो आपको सीधा डाउन करेगा। एक अचीवमेंट तो मिलती है उसकी, बट अगर आपको पहले मिली हो तो ये Bamboo देखो। shoot, bamboo Boom. shoot, nascent Bamboo bamboo shoot. Oh, this one's only just sprouted, and it looks super fresh. Paimon thinks this is the one. हो कैसे थे? हमने 3 कलेक्ट कर लिए ना, 2 ही कैसे हुए? मैंने तो 3 कलेक्ट किए थे ना, इसमें 2 ही क्यों शो हुए? वो ये रहा। These should be enough. Let's head back. Help! Help! Did you hear that? Someone's calling for help. It's coming from over there. Yo, okay. Are you okay? Did any water go down the wrong pipe? Who is he? Fontaine से? I think I'm okay now. Thank you. That was scary. Well, at least you're all right. All thanks to your savior here. Oh, a little girl? मैं यार वो निकाल रहा हूँ मैं Greetings, सोच। everyone. My name is Yao Yao. It's a pleasure to make your acquaintance. तो इसको साइड कर लेते हैं। She's so well-mannered. My name's Paimon, and this is the Traveler. I'm Dvorak, a musician from Fontaine. I came through Stone Gate, intending to head towards Liyue Harbor, but then I became captivated by the beautiful scenery. And before long, I was completely lost. Just now, I was so mesmerized by the waterfall that I slipped and fell into the water. If it weren't for Miss Yao Yao's help, I गिटार shudder to सुंदर think है what वैसे might इसके have पीछे happened. वाला। It's all right, Mr. Dvorak. The splashing around the bottom of the waterfall means the stone path is always wet and slippy. You definitely have to be careful. इसकी वॉइस कितनी Next क्यूट है time यार you're की। exploring an unfamiliar environment, try to focus on what's right in front of you. Don't let your mind wander. As long as you watch your step, accidents like this won't happen anymore. Yes, ma'am. I understand. I'll remember to be more careful next time. Oh, are you? Oh, Please, sir, it's quite all right. I was born and raised here in Liyue. It's only natural for me to extend my hospitality to यार any के guests बेल्स who are बहुत passing मस्त है through. ऊपर से उसे। I expect you still have quite a long journey ahead of you. It's very important to keep your energy levels up. I still have some lotus flower crisps left in my backpack. Why don't we split them between the 4 of us? Aw, what a thoughtful kid! She even has some for me. Yep. I don't know, but I like the Yao Yao actually. So tasty. If only there were more. Having a healthy appetite is a good thing. It means Paimon's still growing. If I'd known I was Still gonna growing run means into क्या you, non I god would've बनेगी made a ये ज़्यादातर। second batch. Hope you're taking notes, Traveler. This is how you treat your Paimon. What do you think, sir? Are Liyue's snacks to you? no, they're perfect. When I was traveling through Mondstadt, I had a chance to try one of their moon pies. It had a meat filling, unlike these crisps. But apart from that, it seems like they follow a similar cooking process. Both are delicious in their own way. As for Fontaine's cooking, though, it's been a long time since I've had a taste of home. Sounds like you spend a lot of time on the... I do. It's part of my job. I'm one of the main organizers of the Iridescence Tour. Iridescence Tour? The Iridescence Tour is one of the biggest music festivals in Fontaine. We're looking to expand, though. Our aim is to hold a festival in every nation. At least, all the main organizers share this goal. Unfortunately, it's a long story, so I'll spare you the details. But anyway, so the main Well, what are they? Just tell Let me see. Well, to explain it in full, I'd have to start with a story from my ancestors. I don't want to take up too much. Oh, I love... We want to hear it too. Okay, then I'll start. The story goes that my ancestor, who was also a traveler, once slipped and fell into a lake during his travels.
As he was sinking and gasping for breath, he heard a wondrous tune in the air. They say it was the most beautiful, moving melody he had ever heard. Even in that life and death moment, the ethereal music seized his full attention and almost made him forget the fact that he was drowning. When he finally came to, he found that he had already been brought ashore. Not too far from him stood an unfamiliar woman with an almost divine aura. Once she saw that he was no longer in danger, she left without a word. My ancestor tried to run after her to give his thanks, but although a mere dozen paces separated them, no matter how quickly he gave chase, he drew no closer and remained a dozen paces behind. In the end, all he could do was to bow in thanks to the woman as he watched her walk away towards the rivers and mountains in the distance, before at last he turned around and made his way home. Once he returned to Fontaine, he began to learn an instrument so that he could spread his story far and wide. Just like after generations of retelling, embellishing, and dramatizing, people have come to think of that lady as something like a fairy. The story's become something of a local legend in Fontaine. It's called the Lady Overlooking the Lake. People now say that if you go down to the lakeside and play an instrument, so long as you play a pleasing melody, you will hear a fairy lady who is out of sight playing along. Is that fairy lady the Archon है क्या वो? Well, yes. As it stands now, it's become a touch too romantic and detached from reality. But I understand the original story and its historical grounding better than anyone else. I wanted to find out the truth of this tale. So I decided to retrace my ancestors' steps and search for that lady's modern-day descendants. Of course, there's no way of knowing where my ancestor fell into the lake all those years क्या वो ago. गान्यू थी या वो काउ So I साउ always के knew साथ that the था वो search साउ would के be दो akin to पार्टनर्स looking थे for a needle in a haystack. I've spent many years on the road now, and I'm nowhere near as fit as I was in my youth. The wish that I've spent half my life chasing after has now become something of an... I haven't lived half of my life yet, but still, I understand how you must feel. Paimon too! It's like... imagine if you saved the center of a lotus flower crisp, which is the best part, by the way, because you wanted to eat it another day. But then suddenly, Paimon would definitely remember that. There's no need to feel पाइमन को sorry खाने for के me. लिए कुछ तो I've दिखता made नहीं है some क्या? progress over the years. For example, I've concluded that the story must have taken place in Liyue. Oh, so you finally found... Yes, in fact, that's an intriguing story in and of it. I'd always known that Mondstadt is the city of song and freedom. But more recently, I heard that the Animal Archon returned to Mondstadt for a festival in the fall, and learned that he himself is a patron deity of music. So I prayed for the Animal Archon's guidance in the Mondstadt Cathedral, and as soon as I set foot back outside the front gate, I noticed a cluster of leaves being blown in the wind further and further west, towards Stone Gate. A friendly local told me that this meant the wind was guiding me in the direction of Liyue. So I followed their advice and made my way here. Right? You get it. I knew I'd find someone that agrees with me eventually. Are you sure? It sounds a bit too much like one of those fake legends told by those treasure hoarder guys to scam. Rex Lapis has returned to the world. Just give me some incense and a little more towards the travel fees, and I will pass your gift on to the Lord of Geo and ask him to keep you and your family safe and well. Don't worry, Yao Yao. We have a lot of experience with deciphering omens and stuff. And anyway, you only got scammed if you handed over Mora, right? Actually, to express my gratitude, I did spend rather a lot. Oh dear. Well, how about this, Why ladies and तो gentlemen? बेटी है वो? Why don't we bring you all to Yujing Terrace to see Miss Ganyu? I don't know very many people, so I can't help you out much. But if you've been scammed, they'll help you get your Mora back. And if the wind was telling the truth, and you want to keep looking for that lady's family? But you've already helped me so... I was going to take some new medicinal herbs and plants I picked to Miss Ganyu anyway. So you know what? It's been a minute since we saw Ganyu too. It should be nice to pay her a visit before Lantern Rite. All right, well, my... Okay, everyone. Please follow me. I'll be your guide. Remember Oh, to watch cute where guy. you're going, okay? He's so cute यार. Uh-oh. Paimon's out of a job. Oh well. Maybe I'll just be a cheerleader instead.
आई लाइक द स्टोरी एक्चुअली, इन्होंने जैसे प्रोग्रेस किया है इनको। ओके हम इधर से चलेंगे, सिंपल तरीका। गाइस हमको आज बहुत ज़्यादा रहा है कि किसी के नोटिफिकेशन मैं भी नहीं देखूंगा। रंगले ऐसी आवाज़ निकाला जैसे एकदम बूढ़ा हो, उसके कमर में दर्द हो। ओके एक चेस्ट है, पर चेस्ट निकालने जाते हैं। चलो कुछ अच्छा होना चाहिए इसके पीछे। ये चेस्ट नहीं मिलती वापस से। Is another man's gem. Just how look beautiful is the lantern right यार। यार पानी में गिर गया, रुको। Rise. Let me take some photo यार। Shit, I forgot. Just 1 second guys. Every journey has its final day. Don't rush. Where do you want to go next? Crumble! Okay guys, I'm back. एक क्विक फोटो ले लेते हैं। Look how beautiful. Oh, forget to save it. Okay, now just quick let's do the story. मैं म्यूट करूँगा बिकॉज मैं बोलने का है नहीं इसमें। Liyue Harbor looks very different from when I came last. It's almost as if I'm listening to the same melody, but with a richer timbre and new variations added. Well, we are here during Lanten Rite after all. It only comes once a year, so they always have a big celebration. It's fair to say that this time of year is when Liyue Harbor looks the prettiest. Great. Let's go and check it out. I can't wait to get into the city and see it all up close for myself. The streets are breathtaking. Smiles and laughter everywhere I look. It's contagious. I can almost feel the music in the air. I have the urge to start waving my conductor's baton. I'm glad that you're enjoying the city. Hey everyone! Fancy meeting you all here. Hello, Xinyan. Let me introduce... Traveler, Paimon, and Mr. Dvorak, right? I've known them all for quite a while. When I was last here to advertise a Liyue stop for the Iridescence tour, Xinyan was one of the few people willing to give me the time of day. Well, feels like I've been chasing this Iridescence tour bandwagon halfway around the world, but I keep getting stood up. What's going on, Mr. Dvorak? I'm so sorry, Xinyan. We've had a string of terrible luck recently, and every time we've... Is that right?
So, what brings you to Liyue Harbor at this time of year anyway? Thinking of... A Lantern Rite music festival. No, I'm actually here on personal business this time. Oh, so... I mean, that's not just hosting a music festival takes a lot of funding and personnel. Moreover, I've never worked with the Liyue authorities before. Even if I were to start putting something together right now, I think it'd be too rushed. Wait, but we're going to meet the Liyue Qixing, aren't we? And the... That's right. Miss Kuching and Miss Ningguang can make anything happen. You mean... what? This is the perfect opportunity! Well, sure, it might not work out, but it can't hurt to bring it up as a suggestion. That's the spirit! See? Even the Traveler agrees with me. Mr. Dvorak, don't let yourself be put off by the fact that a few things haven't worked out recently. As for the performers, I can put you in touch with some local artists. My friend Yunjin is a well-known opera singer in Liyue. With her support and a commissioned song from the Yunhan Opera Troupe, we should be able to get something But what about you, Xinyan? Are you just going to... What do you... If we actually managed to make the Iridescence Tour Lanten Rite Grand Concert a reality, you think I'd let anyone else perform... Wow! There's that rock and roll... What do you say, Mr. Dvorak? But the opening act is not something to be chosen lightly, Xinyan. I will judge your work by the strictest of standards, so please make sure you are fully prepared. Are you kidding? Whew, guess my shopping time's getting cut short. I'm gonna head back right away and start working on this. Yao Yao, if you run into your senior on the way to the Qixing, please send... Okay, I promise I will. You've got this! So about the senior of yours Xinyan mentioned just now, is that anyone we know? Yes, it's Xiangling. She's mentioned you two before. Xiangling's always thinking about cooking. Whenever she gets scrapes or burns, she just leaves them to heal by themselves. She definitely needs someone around her to look after her. I know you must have looked out for her a lot too in the time you've known her. So, thank you for that. Oh, it's Master! Is it okay if I go and say hi to her? Oh, calm down now, dear. I'm not about to run off anywhere. I'm not a bundle of energy like you. I haven't seen you in days, Master! I've missed you. Oh, bless you, Yao Yao. You do say the sweetest things. Ah, look who it is. Visiting friends during the Lantern Rite, are we? You're half right, Madam Ping. We were also trying to help out Mr. Dvorak over here. We were on our way to take him to see the Qixing. Hello, ma'am. I am a musician from Fontaine and an organizer of the Iridescence Tour. I don't suppose you've heard of it. Master! The Iridescence Tour is a super famous music festival! Oh, an old lady like me wouldn't know much about that sort of thing. A music festival, you say? It sounds terribly exciting. Oh, right! Madam Ping, how would you feel about that? You're an elder of Liyue, and you know all about Liyue's cultural traditions. Hearing your thoughts would definitely help us figure out how best to approach it. For example, do you think it might be a bit too modern, or is there any other issue? Why, not at all. Music pays homage to history and culture, and it can also be a bridge between different civilizations. Times change, and the music enjoyed by the youngsters of today is no doubt very different from the tunes I was accustomed to in my youth. Nevertheless, all fine things in life can be appreciated, and so I look forward to it immensely. Hear, hear. I do believe that, my own dear grandmother aside, you are the wisest old lady I've ever met.
goodness gracious. You're all being suspiciously sweet today. Yao Yao, whatever have you been feeding them? Master, you're in such a great mood today. You're even cracking jokes with the rest of us. Oh, well, I'm sure you must have plenty to be getting on with. Yes? Run along now. Don't let me hold you up. Thanks, Madam Ping. We'll see you again soon. And when you meet with the Ministry of Civil Affairs, please remind them that the festivities are not an excuse to procrastinate their work. Understood, Miss Ganyu. I'll take my leave now. Ganyu! What brings you here, Yao Yao? I've brought all the medicine you asked me to pick for you. Oh, and here's a pack of sweet flower seeds as well. Also, these dried jingshin leaves make a great pot of tea that's very good for you. I know you've had a lot to deal with at work recently, but you shouldn't push yourself too hard. If you're not careful, you'll end up falling asleep in the grass again. Well, this is weird. It's like a responsible younger sister talking to their disorganized older sister. Thank you, but Paimon's criticism is quite valid. I do have a tendency to neglect matters outside of work, and that's something I should improve on. Oh, my apologies. I don't believe we've been introduced. Paimon will do... What's wrong? It's definitely an ambitious plan. If there's anything you didn't quite catch... हेलो सर, कैसे हो स्वप्निल सर? again. क्या चल रहा है आजकल? It may be a little difficult to make this happen. Oh? Well, the Lanten Rite is the most important festival of the year. Our celebrations must not only be visually spectacular, but also appeal to the tastes of Liyue citizens from all walks of life. The Iridescence Tour is relatively unknown in Liyue. It's difficult to predict how a brand new show will be received. It would be quite risky for us to bet everything on this one music festival. हम आराम से अपना थोड़ा ग्राइंड कर रहे हैं अपने यू सर्वर में। एशिया में तो हमने सुबह 6 बजे कर दिया था। अब इसमें स्ट्रीम के टाइम कर रहे हैं हम। Therefore, we will not replace or cancel any of our pre-existing program. However, I will submit a proposal requesting to put the Iridescence Tour special performance as the final act of this year's festivities. Some live music will certainly add to the festive atmosphere on the night of the Lanten Rite. As for the venue... सर आपको पता है ये जेनशन कितना बड़ा स्कैम करता है? ये सब इवेंट से बकवास है जब तक इवेंट चालू ही नहीं होता। हाँ बट है कि मैंने स्टोरी अब तक एंजॉय नहीं की ना। मैं इस अकाउंट में ऐसे कर रहा हूँ कि स्टोरी एंजॉय कर रहा हूँ। और ये होयोवर्स बहुत बड़ा स्कैम करता है। मैंने सुबह 6 बजे जेनशन खेला एशिया सर्वर में, जिसमें 300 की पिंग आती थी, उसमें 150 की पिंग आ रही थी सुबह के 6 बजे मोबाइल डेटा से। अब बोलो क्या स्कैम करता है ये होयोवर्स अपने साथ। I'm confident that Qixing will be sure to give it serious consideration. Mr. Dvorak, I will need to discuss with you the number of musicians who will be coming to Liyue, as well as their catering and accommodation requirements. या तो सुबह 6 बजे कम बंदे खेलते हैं अपने इंडिया में, तो इसलिए ठीक पिंग आई है, या पता नहीं होयोवर्स क्या नशे करके बैठा है। As soon as there's work to do, Ganyu's as diligent as ever. इसमें मैंने याओ को देखा तो याओ बहुत ज्यादा क्यूट है सर। मैं तो याओ निकाल रहा हूँ, मैं नहीं जानता, बट आई नीड याओ। And things that they are less good at. So, with that in mind, Ganyu shouldn't feel compelled to become perfect at absolutely everything. I'm good at taking care of people, so that can be left to me. Wow. Hey, Yo-Yo, can you take care of Paimon too? ये पाइमन बहुत ज्यादा बुक्कड़ है सर।
हाँ या वो वैसे तो फ्री मिल जाएगी, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ इसे कॉन्स्टलेशन की, बिकॉज सी इज़ अ डेंड्रो हीलर एंड मेरे को एक डेंड्रो हीलर की बहुत ज़्यादा डेस्परेट नीड है अपनी नीलो टीम के लिए, इस अकाउंट में स्पेशली, बिकॉज मेरे पास आयातो है इस अकाउंट में। और मैं आपको भी अपनी काजुआ का शोकेस करूँगा, तो वो देख के ज़रूर जाना, मेरा काजुआ का डैमेज देखना आप इस अकाउंट में। Here's what I've drafted so far. Anything else you want to add? No, this is excellent. I'm racking my brains, but I don't think you've... Perfect. Then we'll leave it as is. Oh, perfect timing. मैं मतलब इस अकाउंट में सिर्फ अकेले काजुआ के अलावा कुछ भी अच्छा बिल्ड नहीं है, सबसे बड़ी बात। Not at all. हाँ आयात तो है, बट आयात तो डैमेज नहीं देता मेरा इतना, 6 से 7 हज़ार देता है, वो भी एलिमेंटल मास्टरी वेपन पे देता है, वेब पर। अटैक वेपन पर तो उसका डैमेज कुछ आता ही नहीं, एलिमेंटल मास्टरी आयात तो है मेरा। I will. गानी की अच्छी सारी पोल खोल दी सिया याओ ने। I should be getting back. If Yo-Yo stays out for too long, Mom and Dad will be worried sick. Everyone, I'm sure that the music festival will go off without a hitch, so don't worry. And in case I don't see you before, I wish you all a very happy Lantern Rite. Thank you, Yao Yao. Happy Lantern Rite to you. We should go get dinner together sometime. मेरा इसमें से अकेला काजुआ है जो मेरे को सिर्फ एक काजुआ और जोंगली ले जाऊं, फिर मैं मतलब पूरा सब कुछ कैरी कर लेगा। मैं आपको डैमेज शोकेस करता हूँ, इस बॉस पे करेंगे हम ये मेंढक पर, मैं इसको मेंढक बोलता हूँ। सर बताओ, मैं यहाँ पर 1080p स्ट्रीम भी कर सकता हूँ, बस यहाँ पर मेरा नेट हक जाता है बार बार। मैं कितना बड़ा इशू कर दिया इस नेट के चक्कर में। अब सर आप यूरोप सर्वर की पिंग देखो ज़रा, पिंग कितनी अच्छी है यूरोप सर्वर में, और अपने एशिया में नहीं आती ऐसी। मैं गंदा बोलता हूँ कैसे सर? आप जरा इस में जोंगली देखिए, जोंगली को देखिए सर। wine tastes the same as I remember. But where are those ओके सर, ये जो जोंगली देखे सर, इतनी क्रिट रेट है, इस पर भी मिस करता है। मैंने क्रिट रेट वेपन दे रखा है, आर्टिफैक्ट उंगा बुंगा दे रखे हैं, टैलेंट्स देखो सर। मैं कुछ नहीं, बस मैं सिर्फ काजुआ है बस। 2.2 के अटैक, 47:165 एंड मैं 2 पीस दे रखा है। ओह ओके ओके। एंड अब मैं इसमें मतलब अपने शोकेस के लिए तो मैं इस अपनी मेन बिल्ड पर स्विच कर दूंगा। ये मैंने आयातों को 1 पीस दे रखा है, और ये अपना पूरा, ये अपना काजुआ बिल्ड है। हाँ फुल डीपीएस काजुआ, क्योंकि मेरे पास वेंटी है ना इस अकाउंट में, तो वेंटी अपना एलिमेंटल मास्टर वेंटी है यहाँ पर। मेरे को ज़रूरत क्या है, आई हैव वेंटी एंड लुक एट C1 टिग्नारी। और इसमें मेरे को टिग्नारी, जब टिग्नारी आया था लिमिटेड बैनर पे, टिग्नारी आया था तब मैंने टिग्नारी निकाला था इस अकाउंट में। एंड ये मेरी कचिंग जो मैं यूज़ भी नहीं करता, बट एलिमेंटल मास्टर के साथ, ये अपनी नीलो, इसमें भी नीलो है मेरे पास, और ये अपना आयातो 66:140। इसमें इसका क्रिट रेट थोड़ा कम होगा, क्रिट डैमेज और चला जाएगा, बस मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर रखा है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको अपना शोकेस शो करता हूँ। पायरो है पर चलेगा, अपन तो एनिमे का डैमेज टेस्ट करें और थोड़ा फुटबॉक्स भी ले लेते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस क्रिट दिस टाइम। Stabilize. Everybody stand back. Eat this. Clouds high. जस्ट लुक 32 के, To the wind. 30 के, 10 के, इतना देता है वैसे एवरेज मेरा। ये पर 12 5 की नॉन क्रिट था, ये 14 के क्रिट पर जाता है इसका, ये 19 के, 8 के, इतना डैमेज है सर इसका, जो मेरे लिए मोर देन इनफ है अब इसमें कैरी करने के लिए। मतलब ये कुछ भी एनिमी आ जाए सब कैरी कर लेगा ये। हाँ 2 मिनट नहीं सर, मेरे को 12 पुल में मिला था, मेरे को कुछ नहीं किया, मैंने जोंगली निकाला, उसके बाद मैं सिंगल किए, उसमें मैं 12th पुल में मेरे को मिल गया। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ऐसे सिंगल पुल कर लूँ बस। इस वजह से मैंने 1 पुल किया, मिल गया, नहीं मिला देखो, बट अगर मेरे को कुछ मिल जाए ओके, ड्रैगन्स बेन मेरे को चलेगा,
पीटी बना लेते हैं और कुछ नहीं तो या तो शाव मिलेगा या पीटी मिलेगी, कुछ तो मिलेगा। ओके, लक नहीं है मेरा, बिकॉज मेरे को अभी जस्ट कुछ ही पुल पहले मिला था, बट से मेरे को मिल जाते हैं ऐसे। लक मेरा इतना बुरा लक नहीं है मेरा। अरे क्वेस्ट ही तो जा रहा हूं मैं। स्टे पुट एंड वेट फॉर 2 आवर्स। वाह, 2 घंटे वेट करो। ऐसे में काजवा अच्छा है।